that's the part of the unboxing, guys. And hey, what's going on, guys? My name is Rohit. And in this particular video, we'll be giving you the initial impression of this particular watch, that is बोट फ्लैश स्मार्ट और बोट फ्लैश वॉच, क्या नाम रखा है जो भी कुछ है, मुझे यूज़ करते हुए लाइक 1-2-3 घंटे हो गए हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और इसका फुल रिव्यू आफ्टर यूजिंग इट फॉर 48 आवर्स आई विल पुट द वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. So at first we'll talk about the design and build quality of the watch. In one word I can say it is amazing. At the price point of 2500 rupees, the quality of this particular watch is superb. The frame of the watch is fully made up of metal and the back casing is made up of plastic. This watch is very similar to Amazfit GTR series and the Samsung Galaxy watch. These two smartwatches cost for around like 10-12,000 rupees, and this is only 2500 rupees a smartwatch. There are some shortcomings as well. We'll talk about it later on. The display is quite good. The brightness is kind of good only, not that bright, not that dim as well, just kind of okay types. The resolution of the display is not that great. You will see the pixels into the screen, means it is a little pixelated type of display, which is not of course a good quality display. But overall at the price point of 2500 rupees, this boat flash smartwatch is kind of good only. On the side of the watch you get a button with red accent into it. The straps are of good quality. The material is soft and will not cause any type of irritation or rashes. And I've used many smartwatches, like मैंने Amazfit के भी ट्राई करे, Honor के भी, Mi Band और सब ट्राई करे. अभी मैं रिसेंटली नॉइस का ट्राई करा था, उसके स्ट्रैप्स काफ़ी हार्ड थे, बट इसके स्ट्रैप उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट हैं. और Amazfit के जितने तो लाइक सॉफ्ट नहीं है, बट क्वालिटी यहाँ पे सही मिल रही है. उतनी ख़राब क्वालिटी नहीं है और उतनी भी अच्छी क्वालिटी नहीं है. एक एवरेज सी क्वालिटी यहाँ पे मिलती है आपको देखने के लिए. Talking about the fitting and comfortability, this smartwatch is a little bulky. थोड़ा वेट इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मार्ट वॉचेस. तो हो सकता है कि आपके रिस्ट पे थोड़ा हैवी फील हो आपको. ये एक्चुअली मेरे को हैवी फील हो रहा है. और ये इसका मेटल का जो फ्रेमिंग है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा भारी है. प्लस ये स्मार्ट वॉच उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है. आई मीन इफ़ यू हैविंग अ थिन रिस्ट. और टुडे आई डिस्कवर्ड अ न्यू टर्म, लाइक वन ऑफ द सब्सक्राइबर ओनली कमेंटेड ऑन द वीडियो. ही शाउट आउट टू हेमंत. He told me monkey wrists. So I was using gorilla wrist for मोटे वाले wrist, thin wrist for the that one, and medium वाले wrist जो मेरे medium वाले हैं. But we got a new term monkey wrists. तो monkey wrists पे भी ये ठीक लगेगा, बट थोड़ा सा बड़ा है, बट उतना भी ज़्यादा बड़ा डायल नहीं है इसका. एक नॉर्मल साइज़ का डायल है, स्टैंडर्ड साइज़ का डायल है, जो अच्छा लगता है ओवरऑल देखने में. तो इन केस इफ़ यू आर हैविंग अ थिन wrist, monkey wrist, gorilla wrist, medium wrist, सब पे मस्त लगेगा. Talking about the user interface is kind of good only, not that great. It needs polishment, like at some places it lacks. And yeah guys, I've seen some jitter into the UI. But guys, as compared to the previous watches जो बोट ने लॉन्च करे थे, in this case they have improved a lot. Literally they have improved a lot. UI काफ़ी ज़्यादा बेटर किया है इस बार. मैंने इसका हैंडलिंग एप्लीकेशन चेकआउट करा, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर किया है, बट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. और इस वॉच में से ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो मिसिंग आउट कर रही है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है. उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसके फुल रिव्यू में. सो गाइज, दैट्स द प्रीटी मच इट फॉर द इनिशियल इंप्रेशन ऑफ माइंड फॉर दिस पर्टिकुलर वॉच. होप यू गाइज एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आप वेट करोगे इसके फुल रिव्यू के लिए. यूज़ करते हैं, बैटरी सब टेस्ट करते हैं. अभी किसी ने कमेंट भी करा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बोला कि बैटरी टेस्ट करने के लिए. सब करेंगे, सब कुछ एक एक करके आपको बताएंगे ओवरऑल ये वॉच आपको खरीदना चाहिए कि नहीं एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2500 रुपीज़, और वर्थ इट होता है कि नहीं, सब बताएंगे ये करके. सो गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज. होप यू गाइज एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज गिव इट अ ह्यूज थम्स अप. आई मीन लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर न्यू हो तो. और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली न्यू वीडियो में. टिल दैन गाइज, अ पीस आउट एंड बाय बाय गाइज.